So everyone is clear with that there is no inviscid fluid. It is only inviscid region of flow. That is clear with everyone? Yes, I guess. So if you remember, this was conservation of linear momentum. So I'm starting with the discussion now. So this was conservation of linear momentum, and this was the control volume. So this was clear that there are surface forces and body forces on this control volume. And in surface forces, we had pressure force and viscous force. Whereas in case of body force, we could have gravitational force, which inherently is in negative y direction. But in general, we can have body forces, which has components in all the three directions as well. So please remember, this is the most general form of conservation of linear momentum as far as classical mechanics is concerned. So this is not given any special name. So this is conservation of linear momentum as far as classical mechanics regime is concerned. But if we make one small simplification, the only simplification is that now try to see this was the control volume here, and I am showing you the same control volume here. What do you see? What is the difference between these two control volumes? This one and this one. What do you see? What is the difference? What is the In the difference between this control volume and this I control will volume? नीचे करना है हाँ जी? sir viscous. So you are able to see this control volume is lying in which region? सर ये तो बाउंड्री लेयर रीजन से ऊपर वाला है. It is lying above the boundary layer. Yes sir. In the previous case, this was lying Below the boundary layer. below the boundary layer, or some part was below, some part was above the boundary layer. Is that clear? So Euler only derived a special case of this more general conservation of linear momentum. That is, he was essentially interested in applying conservation of linear momentum in this region of flow, that is the inviscid region of flow. So please remember, the only simplification from more general conservation of linear momentum to Euler equation is that Euler is only valid for inviscid region of flow. So what does that mean? Inherently, quantitatively, what does that mean? Body force may have again three components. What about surface force? What can you say about surface force? Naveen? सर दो रह surface. जाएंगे. So only pressure force will be present? Yes, sir. So that is clear to everyone. So in case of inviscid region of flow, the surface force only has pressure force component. Will there be viscous forces here? No, sir. Why? Because the relative effect of viscosity is cancelled, sir. Viscous is a relative. So there will be viscous forces, but there will be no net viscous forces. Yes, sir. So that should be clear in your mind. So there will be no net viscous forces in this region of flow. So now what I am doing is, I have derived this expression using Reynolds transport theorem. Any doubts to anyone in this case?
So this is rate of change of linear momentum of the system is equal to this term, that is in the case of control volume. Now the forces acting on, so this system is Fs and Fb, that is, say total force on this is Fs, surface force, total force on this is Fb. If I want to find out these forces, what can I do is, I can take a small, differentially small element within this system and compute the forces on this small control volume, differentially small control volume, and then finally integrate. Is that clear? So now what I am doing is I am taking a differentially small control volume from that big control volume, and I am now applying and looking at what are the forces acting on this differential element. So what kind of analysis is this? We have studied models of flow. So which model of flow am I now analyzing? Which are the 4 models of flow, Rajvansh? The deformable or first infinitesimal small fixed, infinitesimal small moving, fixed macro volume, and moving macro volume. Okay, so what kind of model is this? This is an infinitesimal small fixed volume. So this is fixed in space. What do you think? What are you finding out? Be careful. You want to find out the total force on what? The system. System. So what do you think? What kind of thing is this? So the fluid shall be moving, control volume shall be fixed. Be careful, in the Reynolds transport theorem. In the Reynolds transport theorem, the left hand side is for the system and this right hand side is for the control volume. Control volume. And this Fs plus Fb is actually another format of this left hand side. So F and Fsb are relating to what? Control volume or system? Or control volume. Hmm? Or control volume, so the forces acting on the control volume. Forces acting on the control volume or on the system. Fs and Fb are what? Say this was some ball. This ball was moving with, you have pushed this ball with some force F. This is the ball. So force is acting on what? The ball. And Ball. say this was some channel through which this ball is to pass. Then this is system or this is control volume? This is so This is system or control volume? we apply force on the ball and ball is passing through a channel. Say this was a channel. So this ball, the force is applied on what? Force is being applied on system. System. Yes, sir. So this is what then? This is differentially small System. system. You can call it control volume. What you have told is not incorrect, but you should see the spirit in this, that this is nothing is going into the system, nothing is going out of the system, this control volume. You Yes, are sir. actually analyzing whatever forces are acting on this system. Yes, sir. So you know that surface forces, pressure is only present because it is an inviscid region of flow. So you can have pressure P in one direction. Pressure is changing along all the 3 coordinate directions.
तो x डायरेक्शन में P से ये प्रेशर पहुंच गया, y डायरेक्शन में P से ये पहुंच गया, एंड z डायरेक्शन में. हेलो सर. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हेलो हाँ जी, बताइए. सर, अभी आपने ऊपर कहा जो ऊपर हम लोग ये लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन लगा रहे हैं वो सिस्टम पे लगा रहे हैं और उसको हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम से इक्वेट कर रहे हैं. हाँ, जो फोर्सेस है वो अपने सिस्टम पे लग रहे हैं. ठीक है. और आपने अभी कहा सर कि जो सिस्टम है वो अपना मूविंग है और कंट्रोल वॉल्यूम फिक्स्ड है. हाँ, ठीक है. तो सर हम लोग ये कैसे कर रहे हैं सर? एक मूविंग फ्रेम को हम लोग एक फिक्स्ड फ्रेम से कैसे रिलेट कर रहे हैं सर? नहीं, रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम में आप क्या करते थे? लैग्रैंजियन को सर आइलेरियन से हम लोग उसमें रिलेट क्या करते करते हैं. थे? मान लो ये होता था कुछ, मान लो ये दिस इज अ रिवर और आपने इसमें ये रीजन चुन लिया, ठीक है. तो यहाँ पे कोई फ्लूइड एलिमेंट था जिसको आपने डाई कर रखा था, आप इसको एनालाइज करते थे. जी सर. तो जब ये मूव करता था इस रीजन में से पास करेगा. हाँ तो सर. मान लो टाइम t इक्वल टू 0 पे था, ये टाइम t इक्वल टू 1 पे था, फिर ये टाइम t इज इक्वल टू 2 पे था. तो रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम किस चीज को रिलेट कर रही है? जो कुछ भी इस रीजन में से क्रॉस हो रहा है और इस सर सिस्टम को रिलेट कर रही है. तो तब भी तो आप एक फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कनेक्ट कर रहे थे आपस में. तो सर ये जो उन्होंने राइट साइड में लिखा है वो कंट्रोल वॉल्यूम वो अ, उस फ्लूइड एलिमेंट के लिए है ये वाला, जो उस रीजन में प्रेजेंट है. ये जो वाला. राइट साइड में जो कंट्रोल वॉल्यूम के लिए आपने फॉर्मूला लिखा, हाँ ये वाला. अच्छा, ये वाला. हाँ, ये वाला ये है. वाला ये वाला अपने क्या कंट्रोल चीज है? वॉल्यूम पे जो अपने फ्लूइड पार्टिकल्स है उनके लिए लिखा है. हाँ, बट ये जो लेफ्ट जो सिस्टम है वही जो डाई है उस जो हाँ, उन्होंने अज्यूम्ड जो वॉल्यूम अज्यूम किया है वहां से पास कर रहे हैं. हाँ. ये है जो आपका ये डाई का मास मूव कर रहा है, और ये रिलेट कर रहा है कि जब वो डाई का मास उस कंट्रोल वॉल्यूम में से निकल रहा है तो उसके साथ क्या हो रहा है. यस सर. हाँ जी, क्लियर है. सो यू शुड बी क्लियर कि जैसे मैं हर बार ये एग्जांपल देता हूं, यू शुड अंडरस्टैंड द इनहेरेंट मैसेज इन दिस एग्जांपल. व्हेन आई से मैं एक और सिंपल एग्जांपल देता हूं. से यहां पे यहां पे एक हॉपर है. हॉपर समझते हो आप? यहां पे कुछ मान लो सैंड पड़ा था, यहां से सैंड गिर रहा है, ये सैंड गिर रहा है, ठीक है. यहां पे एक कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है, जो कन्वेयर बेल्ट मूव कर रही है. हाँ जी, क्लियर है? एनी डाउट टू एनीवन? मैं ऐसे करता हूं, ये मान लीजिए इसके अंदर सैंड पड़ा है, ये सैंड नीचे गिर रहा है, ये कन्वेयर बेल्ट है. कन्वेयर बेल्ट समझते हैं आप? हाँ जी. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस? Yes, sir. So belt is moving in this direction, that is it is taking the this direction. So now let me know, say I choose this as the control volume, this as the control volume. मुझे बात बताइए, जो मोमेंटम है, अब मोमेंटम इन द कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम क्या है? ये फिक्टिशियस रीजन, इसमें मोमेंटम चेंज हो रहा है विद टाइम. मोमेंटम क्या होता है? यस सर, चेंज हो रहा है. मोमेंटम चेंज हो रहा है इसके अंदर.
हाँ Yes, जी। sir. Yes, sir. पहले आप मुझे बताइए पहले कि सिस्टम का, ये सिस्टम है बेसिकली, दिस पार्ट इज सिस्टम, जो सैंड गिर रहा है, Yes, sir. दिस इज सिस्टम। इसका कुछ मोमेंटम होगा। Yes, sir. मान लो ये गिर रहा है से 50 kg पर सेकंड से गिर रहा है नीचे, 50 kg पर सेकंड से ये गिर रहा है, ठीक है। तो इसका मोमेंटम कितना हुआ? 50 kg per second तो velocity हो mass into velocity. Sir, mv हो ना बस. आप इसका मास वेलोसिटी करते हैं, yes sir. तो मान लो 50 kg पर सेकंड से गिर रहा है मान लो, और इसमें चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि नॉर्मली तो क्या होगा, अगर 50 kg से टाइम t इक्वल टू 0 पे गिर रहा था, जब जब ये लेवल कम होगा व्हाट विल हैपन, इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। मैं मान लेता हूं पूरा लेवल है, ये कांस्टेंट है। अब मुझे बात बताओ, बेल्ट इधर को मूव कर रही है, ये कंट्रोल वॉल्यूम है, ये फिक्स्ड इन स्पेस है, क्या इसमें मोमेंटम चेंज हो रहा है इस कंट्रोल वॉल्यूम? अब नहीं होगा मोमेंटम, सर, अगर हाँ जी, ग्रेविटेशनल इफेक्ट एक्सक्लूड कर दें तो नहीं होगा. क्यों? ये मान लो नहीं सर, वेलोसिटी से मूव कर, मतलब वो स्टार्टिंग में होगा सर ना, अगर जब तक हमारा एक स्टेडी स्टेट कंडीशन नहीं आ जाती तब तक चेंज करेगा. जब स्टेडी स्टेट कंडीशन आ जाएगी, यानी अमाउंट ऑफ इनकम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ आउटकम, तो फिर वो कांस्टेंट रह जाएगा. अच्छा। So now try to see. I am putting here control volume plus मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है आपसे, will this term be zero or non-zero? That will clarify your concept. 0 sir. How many of you Stable flow. do you agree that this is zero? Anyone who does not agree that this should be zero? Curly by curly t mv control volume should be zero or not equal to zero? Not equal to 0 होना चाहिए. Not equal to zero. Why do you think? Yes. सर क्योंकि मास तो वेरी कर रहा है ना, हाँ, मास वेरिएबल मास सिस्टम है. So please remember, the momentum in the control volume is changing. Why it is changing? T equal to 0 पे मान लीजिए, या T equal to 1 सेकेंड पे कितना था यहां पे 50 kg, इसके ऊपर yes sir. T equal to 2 सेकेंड पे कितना हो गया 100 kg। तो कंट्रोल वॉल्यूम में जो मास था, वो मोमेंटम था, वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? Yes sir. So likewise, so please remember, when you connect the Lagrangian approach to the Allen approach, essentially Hello, what sir. हाँ जी बताइए। सर ये तो तभी पॉसिबल है ना जब कन्वेयर बेल्ट जो है वो रेस्ट पे हो सर. कि नहीं, सर मूव कर रही क्योंकि है। सर अगर मूव कर रही है तो फिर ऐसा भी तो होगा ना, ये जो सैंड है वो राइट की तरफ मूव करता रहेगा, तो जो कंट्रोल वॉल्यूम हम लोग ने तो अज्यूम ये किया वाला है जो वहां से टर्म है, कम उतरेगा. then this term will be non-zero। यस सर. आप समझ रहे हैं? हाँ तो मान लो ये कंट्रोल वॉल्यूम है जो मैंने ये पिंक से शो किया हुआ है, अगर ये कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी कम है तब तो ये जीरो हो जाएगा कुछ देर के लिए। अगर कन्वेयर बेल्ट भी मूव कर रही है मान लो, तो आप ये कह रहे हो कि ये ब्लू वाला पार्ट इससे बाहर जाने लगेगा, यही आपका क्वेश्चन है? हाँ सर. हाँ, तो वो तो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने सर वो तो हम लोग वो कन्वेयर बेल्ट के वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा ना कि सर कितना वो बाहर जा रहा है. ये जो डी कर्ली एम वी अपॉन कर्ली डी टी है कंट्रोल वॉल्यूम के लिए, वो जीरो है या नॉन जीरो, वो कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा ना. कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा।
सर कि उस अगर ज्यादा वेलोसिटी होगी तो फिर जो अमाउंट ऑफ मास है वो ज्यादा रेट से आगे बढ़ेगा और ज्यादा रेट से वो बाहर जाएगा उस कंट्रोल वॉल्यूम के। अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताइए, अब मैं एग्जांपल बोलता हूँ आपको। मान लो मैं कर लेता हूँ। ओरिजिनली से t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड था, ठीक है, t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड था, यहाँ पे 25 केजी था, हाँ सर। ठीक है, और मान लो ये कन्वेयर बेल्ट 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही थी, तो मोमेंटम कितना हो गया? 25 इंटू 5। 125। हाँ जी, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अब मान लो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, मोमेंटम कितना हो गया? 50 into 5। 50 इंटू 5। सर मगर यही पॉइंट है ना कि ये जो 50 है, इट वुड नॉट बी 50 अगर कुछ कंटेंट बाहर भी आ जाएगा हाँ, वो कंट्रोल वॉल्यूम। that this term will account for। ओके। आप मेरी समझ रहे हो? इसको इसी तरह से सोच के देखो, ये टब था, इसमें ये एंटर हो रहा था, ये एग्जिट हो रहा था, तो मान लो ये 20 था, ये 2 3 4 5 था, तो बेसिकली करली m बाय करली t कंट्रोल वॉल्यूम किसके बराबर था? हमने इसमें तो उल्टा निकाला था कि ये इन माइनस आउट, यस सर। दिस वाज इक्वल टू दिस। Here also indirectly this term may be affected by this term, so that this is a constant. You can think it in that way also कि इन दोनों का इफेक्ट से ये टर्म आ रही है। But the point here is you should always be clear that we are actually relating a moving frame of reference with a fixed space of reference when we are using Reynolds transport theorem. Something is coming into the system, something is going out of the system or the control volume, and we are looking at how it is changing within the control volume. So this term represents what change is happening to that extensive property n in the control volume. And this is, हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर अगर यही देखा जाए सर, अगर कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है हाँ, तो फिर 0.5 जब t इक्वल टू 0.5 था तो 125 क्या नाम है, क्या बोलते हैं, मोमेंटम जो भी है उसके हिसाब से वो बाहर जा रहा था सैंड। नहीं सैंड बाहर नहीं जा रहा था। अगर मैं ये सिंपल सी बोलूं बात कि ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, ये सैंड ही बाहर मूव कर रहा है ना, आप सैंड मूव कर रहा है ना बाहर। हाँ सर। तो जो सैंड है, सैंड 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, ठीक है, तो आप क्या कह रहे हो, आपका ये मतलब है कि ये जो कन्वेयर, मतलब इससे बाहर जो जा रहा था, आप ये कह रहे हो कि वो है 5 मीटर पर सेकेंड इंटू, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड इंटू 25, ये आप ये कह रहे हो कि जो बाहर जा रहा है वो ये वैल्यू है। दिस इज योर पॉइंट? यस सर। Okay, wait for a second. So I'm putting it here. Say this is 50 kg per second. This was the conveyor belt. And so this was moving at 5 meter per second. And so this was the control volume. Say this was the control volume. So some sand was flowing into the control volume and this conveyor belt was moving. So your point is that at t is equal to 0.5 seconds, we know that 25 kg of sand might have fallen into this region. Now, if this belt was itself moving, so this belt
was itself moving with 5 meter per second, then your contention is, but that will depend कि ये पूरा filled है कि नहीं है. मान लो sand यहां पे था, so this sand will have to move this additional distance first, then it will cross this. And is that clear? Yes, sir. So it depends. So I will also send across, if you want, I have certain numericals based on this. I will send the answers also along with that. You can practice those and then we can discuss those. So this subtlety, these subtleties should also be included in the analysis. That whether everything that is falling is coming out, or मतलब अगर पूरा completely filled है, then your answer is correct. अगर ये मान लो इस तरह से होता कि सारा filled है पूरा कंट्रोल वॉल्यूम, तब तो आपका आंसर करेक्ट है. लेकिन मान लो ऐसे हो, ये कंट्रोल वॉल्यूम चुना आपने, यहां पे गिर रहा है सैंड, तो इस सैंड को पहले ये डिस्टेंस भी तो क्रॉस करना पड़ेगा. अच्छा, इतना डिस्टेंस कवर करने पे फिर और सैंड गिर जाएगा. हाँ, और सैंड गिर जाएगा. आप समझ रहे हो मेरी बात? यस सर. तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या गिवन है. तो अगर वो बोलता है कि ये पूरा इसका इतना ही चौड़ा है कि ये सब कुछ इसमें गिरता है और फिर वो मूव कर रहा है, फिर आपका आंसर करेक्ट है कि वो तो उतना ही मूव कर जाएगा बाहर. लेकिन अगर इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन है, देन यू नो दैट जब ये पार्ट यहां पे आया और पार्ट गिर चुका था, so that you will need to include them. So I will not waste time here. I will send across a tute sheet that is separate from your formal tute sheet. If you have time, you can spend time on that. That will clarify your concept. Then we can discuss anytime. Any clear hai? Any doubts in the Reynolds transport theorem? It is relating a moving system with a stationary system. Now that is clear? सर इस केस में जैसे वो कन्वेयर बेल्ट वाला केस था, उसमें फिर मोमेंटम कंजर्व रहेगा या चेंज हो जाएगा? इसमें सर इसी केस में जैसे वेरिएबल मास सिस्टम है, मोमेंटम कंजर्व नहीं माना जाएगा? मोमेंटम कंजर्व मतलब मोमेंटम तो कंजर्व है. मोमेंटम जो होगा सिस्टम का, वो किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर होगा? ये कन्वेयर बेल्ट थी सर. इस कन्वेयर बेल्ट को मूव कराने के लिए कुछ फोर्स लग रही होगी. यस सर. तो जो मोमेंटम चेंज आएगा सिस्टम में, आप ये देखो ना, अगर आपको याद हो छोटी क्लासेस में, यहां से मान लो वो 2 मीटर पर सेकंड से गिर रहा था 50 केजी. इसका मोमेंटम ओरिजिनली कितना था? 100 था. इन विच डायरेक्शन? वाई डायरेक्शन. वाई डायरेक्शन. क्लियर है? अब इसका मोमेंटम क्या हो गया? मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पे मान लो 50 होता, कितना मोमेंटम हो गया? 250. डायरेक्शन क्या होगी? हॉरिजॉन्टल. तो जो मोमेंटम में चेंज आया वो किस वजह से आया? इस बेल्ट की मूवमेंट से. यस सर. बेल्ट को मूव कराने के लिए क्या लगेगी? फोर्स. तो इस केस में जब आप रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम लगाओगे, आप ऐसे लिखोगे dmv by dt is equal to, then this should be equal to force, and then these can be written down as like this. Yes sir. And clear है? सर इस केस में सर टोटल फोर्स किस फोर्सेस के कारण लग रही होगी सर? सरफेस और बॉडी फोर्स तो होंगे सर, बट कैसे? बॉडी फोर्स, देखो बॉडी फोर्स की वजह से तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही. नो सर. जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, अगर मान लो बेल्ट ऐसे होती तो आपको फिर ग्रेविटेशनल पुल भी लेना पड़ता. तो F में क्या होता फिर? Fs प्लस Fb. इस केस में क्या है? सिर्फ आपको एक्चुअल में फ्रिक्शनल फोर्स लगानी पड़ रही है. फ्रिक्शन को यहां पे जब आप कुछ मास रख देते हो, आपको इसको मूव कराने के लिए फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा. हाँ सर. So that force is now a surface force only, not a body force.
बॉडी फोर्स इनडायरेक्टली आ रही है, आप ये कह सकते हो क्योंकि इसके अंदर मास है, अब मास को मूव करना पड़ रहा है, लेकिन आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स आप U into N करते हो, N is a surface force, although N in principle is equal to mg, that is something different, but actually you are treating surface forces only as far as horizontal conveyor belt is concerned. Any clear है? Clear? Yes, sir. So that is about Reynolds transport theorem. Now I am coming back to the main topic. That is, we have already defined that for differentially small control volume, so we are analyzing the forces acting on this system, differentially small system. So we know that pressure forces will be acting in opposite direction and on the opposite faces. तो ये A, B, C, D पे अगर प्रेशर P लग रहा है तो E, F, G, H पे जो कि dx डिस्टेंस पे है ये प्रेशर लग रहा होगा. ये तो क्लियर है? This is clear to everyone? Likewise in y and z directions. So this is accounting for surface force, that is the pressure force in this case. Likewise, you can have body force which has all the three components. So please remember, in Euler equation we have not still written down that bx is equal to 0 or bz is equal to 0 and by is equal to minus g. So this we have not up till now committed. We are assuming that these are non-zero components. So please remember, Euler equation involves any kind of body force, not only the gravitational force. Euler equation only has one simplification, that is you are deriving in the inviscid region of flow, that is you are only considering pressure as the surface force, not the viscous forces. So now you know that. So I have drawn here all the forces along with the body as well as the surface forces. So now please be careful in this. Sum of surface forces and body forces मैंने एरो से रिप्रेजेंट कर दी. P towards right थी, P plus curly P by curly dx towards left थी. इसी तरह से P upwards थी, ये downwards थी, ये upwards थी, ये opposite direction में थी. So these were the surface forces which I have added. These are the body forces which I have added. So this is the final expression you get, that is the differential forces on this differential element is sum of surface and body forces. So this term represents surface and this term represents the body forces. Any doubts to anyone? Any doubt to anyone? Differentially small सिस्टम पे या कंट्रोल वॉल्यूम पे ये फोर्सेस हैं, इनको मैंने इस तरह से तोड़ के लिख दिया. एनी डाउट्स टू एनीवन? रो bx इज द बॉडी फोर्स पर यूनिट मास. सो इसको वॉल्यूम और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, सो इट बिकम्स फोर्स. लाइकवाइज इन दिस केस. एंड दीज वर pressures into area becomes force. So I am actually adding all the forces. So I am essentially applying this thing. dF is equal to sum of what? All dFs. Nothing more than that. So this is dF resultant. So this is equal to sum of dF for surface as well as pressure force. Or I could write down like this also. Instead of dF, I am writing down here dF surface plus dF body force. This is equal to dF resultant. Any doubts to anyone? सर हाँ जी बताइए. सर जो P है वो कैसे कैंसिल हो गया, जो P वेक्टर प्लस P वेक्टर प्लस मतलब कर्ली P बाय कर्ली x. सर जो अच्छा ये वाला टर्म कह रहे हो, अब रेड वाला इसको बताऊं.
नहीं सर, नीचे जो सर आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म बताई है ना अभी हाँ इस इक्वेशन की, हाँ, उसमें जो पहली इक्वेशन में पी वेक्टर प्लस है वो कैसे कैंसिल हो गया ये? अच्छा ठीक है। एक सेकेंड, आप यहाँ पे आ जाइए। ये दिख रहा है आपको ये वाला? यस सर। इस पे फोर्स कितनी है इस ए बी सी डी पे? ए बी सी डी पे पी पी इंटू, ये अगर डी वाई है और ये डी जेड है और ये डी एक्स है, तो क्या लिखूं? पी इंटू डी वाई डी डी वाई डी जेड। डी सर। यस सर। इसकी डायरेक्शन क्या है? राइट। राइट। ठीक है। यस सर। अब इस फेस पे ई एफ जी एच पे ई एफ जी एच में पी प्लस करली पी बाय करली एक्स डी एक्स इंटू एरिया क्या है? इंटू एरिया डी जेड डी वाई डी जेड। डी जेड। यस इसका डायरेक्शन क्या है? सर। ऑपोजिट में लगेगा। तो ये अच्छा P ठीक है, समझ गया इंटू सर। डी वाई डी जेड और ये P इंटू डी वाई डी जेड कैंसिल हो गए। यस सर, समझ गया तो सर। क्या रह गया? सिर्फ नेगेटिव N डायरेक्शन में करली P बाय करली एक्स इंटू डी सर, एक्स इंटू समझ डी गया। वाई डी जेड। क्लियर है? यस सर, और यहाँ समझ पे एक मिस्टेक की हुई है मैंने। कैन यू आइडेंटिफाई दैट मिस्टेक? वेरी सटल मिस्टेक। आयुष, व्हाट इज द मिस्टेक हियर? सर नेगेटिव साइन होना चाहिए सर आगे। नेगेटिव तो ठीक है। प्रेशर शुड नॉट बी हैव बीन रिटन एज अच्छा वेक्टर। गया। आप समझ रहे हो? मुझे सारे को लिखना चाहिए था। जब एरिया से मल्टीप्लाई हो जाए then I should write down a vector. Clear है? So please remember pressure is a scalar quantity. हाँ जी, नेगेटिव आप क्यों कह रहे थे नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर, मैं ये बोल रहा था वहां पे ऊपर। नहीं नहीं, यहां तो ठीक है क्योंकि मैंने एरोज बना दिए ना। अच्छा सर, वो एरो देखा नहीं हाँ मैंने। ठीक है, these are arrows, these are not vectors, sorry. So these are arrows I should have put below ताकि वो वेक्टर से कंफ्यूज ना करें। तो ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो इसलिए नेगेटिव हो गया क्योंकि नेट इस डायरेक्शन में है, बिकॉज दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। Clear? Any doubts to anyone? So this is the final expression. If you have any doubts, please ask me. Now what can you write down this as? ये आइदर क्या कह रहे हो? सर ये जो इक्वेशन अभी आप हो गया सिंपलीफाई अभी, और क्या कह रहे हो? सर जो इक्वेशन आपने निकाली है यही है आइदर इक्वेशन? इसमें थोड़ा सा चेंज है बस, बाकी यही है, मैं आपको बता रहा हूं बस। इस टर्म को क्या लिख सकते हो आप? इन तीनों टर्म्स को इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो? करली P बाय करली X प्लस करली P बाय करली Y प्लस करली P बाय करली Z। हाँ जी, क्लियर है? इस टर्म को डेल What can you write down this term as? डेल पी Del डेल डॉट P. पी। So minus del P into dx dy dz. क्लियर है? इस टर्म को ये लिख सकता हूं। Any doubts to anyone? So this now becomes equal to this term. Any doubts to anyone? This is the differential sum of differential surface force and body force. This has been written down like this. So now if I want to find out for the entire control volume, I have found for this. How can I find for the entire control volume? I know DFS, DFB. I want to find out FS plus FB. What should I do? इंटीग्रेट। Integrate volume integral, because I want to integrate about the entire volume. So please be careful now. What I am doing is I am integrating it. If I integrate it, what do I get? If I integrate this right hand side, what do I get? What do I get? I get minus
del P plus rho B into, this is dV. So dV is dx, dy, dz, triple integral. Any doubts to anyone? Any doubts to anyone? So instead of Fs plus Fb, what can I write down now? Triple integral control volume minus delta P, del P plus rho B into dV. So this is the value of Fs plus Fb. Now can you compare the left hand side and the right hand side? What can you delete? Both have triple integral. So what are you finally left with? Minus del P plus rho B is equal to curly rho B by curly T plus del dot rho VB. So this is called the Euler equation of motion. Any clear hai? Any doubts to anyone? So I am repeating again in just 30 seconds. What you did is you took conservation of linear momentum. You know that rate of change of linear momentum of the system is equal to forces acting on that system, and those forces were called as surface force and body force. So this is the left hand side of the Reynolds transport theorem. On the right hand side you have what happens to that as it moves across the control volume. That is what happens to the momentum. So what you are saying is, in case of Euler equation, you are applying conservation of linear momentum to the inviscid region of flow. So it means surface force will only include the pressure force. So that was one simplification. That was the only simplification which I made. But now the problem was I wanted to actually calculate Fs and Fb in terms of more measurable quantities. So to convert Fs and Fb to more measurable quantities, I started the analysis by taking a differentially small part of the entire system. And I computed what are the forces acting on that differentially small system. So that was a differentially small system. I found all the forces. These are surface forces. These are body forces. And I know that whatever is acting on this differentially small volume or system, if I know that, I can integrate it to find out the total force on that entire system. So this is what I got after adding all the forces in x, y, and z directions. So I got this as the expression for force on this differentially small part of the entire system. Then I simply integrated this so that I get what is called the Euler equation of motion. So this equation is called the Euler equation of motion. This is called the Euler equation of motion. So for stationary control volume, no? For stationary control volume and non-deforming. If you want to find out for the other thing, what will happen? Only the right hand side will change. Yes, sir. So then what will you have to write on the right hand side? So then you will have to simply state d by dt rho v, then del rho v, here v relative. Then it becomes for moving or deforming
control volume as well. Any clear hai? So please remember this. This is the Euler equation, and it is nothing more than conservation of linear momentum applied to inviscid region of flow. Nothing more than that. Only the manipulation I have done is in the Reynolds transport theorem, the left hand side, that is the force Fs plus Fb, I have written down in some other variables. Nothing more than that. So Euler equation can be readily derived from Reynolds transport theorem by putting capital N is equal to small mv, then small n is equal to v, and then changing the left hand side to more measurable quantities, that is pressure and the body force. Nothing more than that. So I will break for today, and we will continue with the extension of this Euler equation, that is called the Bernoulli's equation. So we will be deriving tomorrow the Bernoulli's equation, and we will see that the famous concept that energy is conserved. I think you might have studied this in the physics classes. You might be conversant with this: v square by 2 plus p by rho plus z is equal to constant. But this is not as simple as that. There are subtleties to this. This is constant for what? Along the streamline, across the streamline. We will discuss those concepts tomorrow. So as of today, we have completed with the Euler equation that represents conservation of linear momentum for inviscid region of flow. Tomorrow we will be taking up conservation of energy, and that inherently for inviscid region of flow, and that is called Bernoulli's equation. Okay then. Thank you, sir. Okay.